Hello. Now onwards we will read from question number 51 to 60. Okay. Our question is 51 number question. Ralph Taylor and Hilda Tava grouped objectives of curriculum development into the following categories. कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किए थे वो लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम को? नॉलेज एक्विजिशन, फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, एकेडमिक स्किल्स और स्टडी हैबिट्स. साइकोमोटर डोमेन्स नहीं था. ठीक है. राल्फ टेलर एंड हेल्डा टाबा आर इंडेड renowned for their work in the field of education. कौन कौन? राल्फ टेलर एंड हिल्डा टाबा. पार्टिकुलरली कंसर्निंग करिकुलम डेवलपमेंट. ये लोग इम्पोर्टेंट किस फील्ड में है? करिकुलम डेवलपमेंट में. दे ग्रुप द ऑब्जेक्टिव्स इनटू वेरियस कैटेगरीज. जो भी करिकुलम डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में वो लोग डिवाइड किए हैं. सच एज फर्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज गेन करना. फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड एकेडमिक स्किल्स फॉर और स्टडी हैबिट्स. While psychomotor domains are significant in education, psychomotor domains जो है वो एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है. they were not explicitly categorized under their curriculum. वो करिकुलम में ये लोग डिवाइड नहीं किए थे करिकुलम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स. हेंस द कैटेगरीज जो भी आंसर है ACDE आंसर राइट है. ठीक है. अभी देखेंगे 52 क्वेश्चन क्या बोला है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स. कौन कौन सा करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है? ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज मॉडल ORC, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल OD, कंसेंसस बेस्ड एडेप्टेशन CBA मॉडल. ठीक है, तीनों ठीक है. फिर सिस्टम्स मॉडल ये भी सही है. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सही नहीं है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Curriculum implementation models are theoretical constructs designed to assign the introduction and promotion of curriculum changes within educational system. The overcoming resistance to change ORC model. Overcoming resistance to change ORC model. फिर organizational development OD model, consensus based adoption model CBA model, and systems model are all widely recognized implementation models. The advanced organizer model, while beneficial, is primarily used as a teaching method and is not specifically focused on implementing curriculum changes. ठीक है. अभी देखेंगे 53 क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे 53 क्वेश्चन में. Which of the following are not true for एनकोभा. एनकोभा के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू. ठीक है. आंसर होगा हमारा इट यूजेस पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल्स. नहीं है ये. इट ट्रांसफॉर्म्स क्वासी एक्सपेरिमेंट इनटू ट्रू एक्सपेरिमेंट. ये सही है. इट ट्रांसफॉर्म क्वासी एक्सपेरिमेंट इनटू ट्रू एक्सपेरिमेंट. देन दिया गया है इट हैज़ 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये भी सही है. फिर दिया गया है इट कंट्रोल्स वेरिएंस एट एनालिसिस स्टेज. नहीं है. इट कंट्रोल्स वेरिएंस एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसर्च डिज़ाइन. ये सही है. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एनकोभा क्या है? एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस. एनकोभा का फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस is a statistical method that is used to compare one variable in 2 or more groups taking into account or to correct for variability of other variables called covariates. Statement B is incorrect as ENCOVA does not transform a quasi experiment into true experiment. It simply helps to control for variance and reduce error. Statement C is also incorrect as ENCOVA has one dependent variable. इसमें क्या होता है? एक one dependent variable and 2 or more independent variable. Statement E is incorrect as it controls variance at the analysis stage. ये analysis stage में कंट्रोल करता है वेरिएंस को, नॉट एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग
द रिसर्च डिजाइन। तो वो 3 गलत है, बी होगा हमारा आंसर। फिर 54, व्हेन द साइज ऑफ द सैंपल इन ए स्टडी इंक्रीजेस, कब साइज ऑफ द सैंपल एक स्टडी में इंक्रीज होता है। स्टैंडर्ड एरर अप्रोचेस द स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं ये नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिक्रीजेस, ये होगा। एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन इंक्रीजेस, ये होगा। फिर द सैंपल मीन मूव्स अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ये नहीं है। जनरलाइजेशन फॉर द सैंपल बिकम्स मोर डिपेंडेबल, ये होगा आंसर। ठीक है, तो क्या बोला है, एज द साइज ऑफ द सैंपल इंक्रीजेस इन ए स्टडी, the error associated with the estimation of population parameters decreases, improving the accuracy of predictions about the population from the sample data. The standard error, which measures the dispersion of sample means around the population mean, also decreases. Lastly, with a larger sample, the generalization from the sample becomes more dependable, increasing the confidence that the sample accurately represents the population. 55 question क्या है, on the basis of procedure of inquiry which of the following are types of case study। आंसर होगा descriptive case study, then हमारा होगा evaluative case study and interpretative case study on the basis of procedure of inquiry। Based on procedure of inquiry, case studies can be divided into several types. These include intrinsic case studies, where the researcher has an interest in the case itself. फिर descriptive case studies, where which are used to describe the variables, and evaluative case studies used to evaluate the effectiveness of an intervention or program. Interpretative case study thou exist are not widely acknowledged as a separate study। तो 3 होगा, इंट्रिंसिक, डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव केस स्टडी। फिर 56 क्वेश्चन क्या है, which among the following are not considered assessment as learning। इसका आंसर होगा A, B and E। टीचर gives a unit test and assigns marks। टीचर asks students to grade the assignment of their peer। फिर होगा teachers gives grades and asks students to divide themselves into 2 groups based on their marks। Assessment as learning revolves around the idea of students being active, critical assessors who make sense of information, relate it to prior knowledge, and use it for new learning. In this context, when a teacher gives a unit test and assigns marks, or gives grades and asks students to divide themselves into 2 groups based on their marks, it's not considered as assessment or as learning. Also, when the teacher asks students to grade the assignment of their peers, it's a form of assessment for learning rather than assessment and learning। 57 question क्या है, which among the following should be the criteria to assess a teacher made ICT। आंसर होगा कंटेंट वैलिडिटी, फिर लैंग्वेज, फिर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एट लीडर्स एंड, और होगा डाटा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। देखते हैं जिस डिस्क्रिप्शन क्या है, द प्राइमरी फोकस व्हेन असेसिंग ए टीचर मेड ICT, टीचर मेड ICT रिसोर्स शुड बी ऑन इट्स कंटेंट वैलिडिटी देखेंगे, लैंग्वेज क्लैरिटी देखेंगे, अवेलेबिलिटी एट लर्नर्स एंड देखेंगे, एंड डाटा और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट देखेंगे। द टाइम टेकन बाय द टीचर इज इन डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स इज इरिवेलेंट, ये मतलब रिलेवेंट नहीं है टू इट्स एफिशिएंसी एज एन एजुकेशनल टूल, हेंस इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द असेसमेंट क्राइटेरिया। देन होगा 58, which among the following are multisensory media। television, multisensory media, television, teleconferencing and motion picture films, television, teleconferencing and motion picture films।
Multisensory media engages multiple senses of learner, typically including visual and auditory stimuli. Television, teleconferencing, motion picture films fall into this category as they combine moving images and sound. Graphs, while visually informative, don't engage the auditory sense. Podcasts are primarily auditory and don't provide visual engagement. 59. Which among the following digital initiatives are being used by researchers or teachers for various research related activities? First होगा शोध गंगा, then शोध गंगोत्री, then शोध सिंधु. ये पाठशाला ये यात्रा नहीं है. Shod Ganga, Shod Gangotri, and Shod Sindhu are digital initiatives utilized by researchers and teachers for various research activities. Shod Ganga is a reservoir of Indian thesis. Shod Gangotri hosts synopsis of research topics in Indian universities. Shod Sindhu provides access to e-resources to universities and colleges. E-Pathshala is primarily a learning platform and e-Yantra is a robotic initiative. Neither are primarily used for research activities. 60. Last question. Which of the following are the steps of Gagne's 9-step instructional design? इसका आंसर है गेनिंग अटेंशन, फिर इलिसिट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, क्रिएटिंग कंटेंट, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस. मैं आंसर 60. Gagne's 99 events of instructions is a method of organizing the teaching learning process, and each step serves a definite purpose in the whole teaching learning scenario. Gaining attention, elicit performance, and providing guidance are three of these steps. Creating content and reviewing performance are not part of Gagne's 9-step model. They are broader educational processes.